So it is going to be an insightful session, and we expect all of us to be actively participating in here. And also, I request you to share the message with your friends and family so that they can be a part of the session as well. Over to you, Shafiq sir. Jazakallah. Jazakallah khairan, Halim sir. Thank you for your sweet introduction. Let me begin the session now. Everyone. First of all, I'd like to thank Halim sir for the kind introduction, as well as the Graduates Guild 1MBody for giving me this opportunity to present in front of you today. The topic for today is guiding hands, how parents can help their children manage exam stress and future choices. This topic was actually suddenly planned as the exam timetable has been announced by the Tamil Nadu government. So it's not only about the annual examination. I'm going to talk generally about how the students has to appear for the exams and what kind of stress they face and how parents can help them as a guide or as a mentor in order to make their exam stress a little bit easier and as well as to guide them in order to prepare for the exams. Before I begin with, I'd like to ask a few questions to the audience. Those who want to answer can just raise your hand and try to answer to these questions. Do you remember how you prepared for exams when you were a student? Anybody from the audience? If no one is standing up, I'll unmute and answer my experience. Okay. If at all you want to answer, you can even post your answers in chat box. Just to have some icebreaker in the beginning. So I just ask the question. Okay. Ideally, once the timetable is up, so we will be, I used to mark the important questions which are there for that subject. Okay. And I used to practice in the rough note and what are the important activities are there. And we used to discuss with the friends that what will be the questions that might be asked in the examination. Okay. That, traditional learning approach. That was a traditional method of learning. Even I used to learn like that. And we used to have something called as a question bank. Do you remember, sir? Yes, I do. Yeah. So our teachers also used to prepare us in collaboration with the question bank. They know that from which chapter, what type of questions they may ask, how many 2 marks will be asked in a particular chapter, how many 7 marks will be asked in a particular chapter. So based on that, they will plan and they will help us to prepare for the examination. But now, just think about how different things are for today's kids. Is it the same pattern being followed, or is there any difference in the pattern? Anybody from the audience can answer this. So just compare it with your generation's examination pattern with today's generation examination pattern. Now, today's generation examination pattern, when you look at, it is purely based on conceptual learning method, right? In those days, children will be given, okay, one comment I received, first we make a schedule. So they used to make a schedule for the preparation. So in those days, we know exactly what we have to learn. Okay, and this is the question they will ask, and this is the answer we have to write. That's it. Whether the student understand the answers or not, whether they understand the question or not, it doesn't matter for them. For them, the main thing is they need to score good marks. So out of 100, how much marks they score, that was given much importance in those days. Zablonics for light. Bluetooth mode. But nowadays, it is not so. Nowadays, so many things have been changed, especially the pressure which is faced by the students, because the type of questions, innovative questions which they ask in exams, they need to answer not only through rut learning, but also through complete understanding of concepts. And second thing is, a lot of distractions is also there among today's kids. In our days, we do not have much distractions because we do not have smartphone facilities or any kind of multimedia facilities. The only thing which we love to do is we used to watch TV. We used to go for outdoor to play some games. So these are the fewer distractions which we had. But nowadays for the children, the distractions are more. They are more prone towards gaming, Netflix, and all this. So all these challenges we have for the children, and in that environment, we had to make them to prepare for the examination, and that's a bigger challenge for the parents. Now, in this particular presentation, I'm going to explore you how exam preparation has changed
over the years, and how students cope up with this stress in today's world. And how, as a parent, because most of you in the audience might be parents here, whose student might be appearing for board exams or any other kind of competitive exams. So I'm just going to tell you how the parents can offer best guidance so that your students gets relieved from the exam stress, and you can also help your children navigate for their future career choices. Now, first of all, we need to understand what is an exam, what is the purpose of the exam. So exams are nothing but they are the formal assessments which are designed to evaluate a student's understanding, knowledge and skills. Remember, so exams किस लिए होता है? जो भी बच्चे स्कूल में सीखते हैं या कॉलेज में सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है पहले. So जो भी टीचर पढ़ाते हैं उन्हें उस कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है. समझने के बाद जो चीज उनको याद करना है, through knowledge they gain. They have to go refer the books, they have to take the test books and read out of it, and based on that they need to learn. I request the audience to mute your mic if it is on. And the third thing is they need to develop their skills out of it. Okay, like for example, if a student is learning 5 subjects, like in SSLC, the traditional method of preparation of exam is they have to learn language and then math, science and social. So, but out of that, some student might be good in artistic skills, or some student might be good in oratorical skills. So he need to understand his skills, and based on that, he need to participate in different subjects or different areas, and he need to implement that knowledge in it. So these exams helps them to measure their learning progress out of how many ever years or how many ever months he has prepared to appear for the examination. So how much he has prepared and how much he can able to remember and how much he can able to apply the concepts under a particular time, because exams will not be for a full day. Exams will be, some exams will be 1.5 hour exams. Some exams will be for 3 hours exam. So in that 3 hour, whatever he has learned, okay, throughout the year, that he has to write it, he has to present it. And based on that, we analyze how much he has understood the concepts, how much he has remembered the concepts, right? This is what is the purpose of exam. And second thing is significance of exam. So exams helps them, it helps to, I think somebody's mic is on. Yeah. Now listen. So significance of exams, we can say like it helps to keep some academic benchmark, because exams will not be conducted just once in a year. Okay, in a school, if you take, exams will happen once in 3 months or once in a month, like that. So why we keep the exams frequently means in order to check their progress. Okay, how much they have learned over a period of month, or how much he has learned over a period of 3 months or 6 months. So that will help them to remember, as well as that will help them to perform much better in their final examination, and that will help them to choose their academic as well as professional choices. Okay, now I'll just show you one mind map which will help you to clearly understand the purpose of exams based on their grades, based on their skills, and as well as it will help them to pick the best career out of it. So first of all, when it comes to grade, so exams are like academic performance indicator. So for each and every student, their performance will differ. It will not be the same. So through exams, we can able to identify how much ability a student has. So that is like a tool for checking their academic performance indicator. And second thing is exams only help you to go for higher education. So exams only will help you whether the student is qualified to go for or to promote to higher classes. So right from the first standard, the student directly do not jump to 10th standard or college level. All right. So each and every year the exams helps to promote himself to a higher level. And the third one is exams also helps them to get the scholarships and recognition in best colleges. Like for example, if a student scores good marks in +2, and if he also appears in competitive exams like NEET exams or IIT exams, and in that exam also if he scores better, then it will help him
to get the scholarships. He can able to study professional courses at free of cost or at discounted rate or without any donations in a better college. So that is the purpose of exam in terms of grades. And second thing is, exams also helps the students develop their skills. Like he can able to develop the critical thinking. Exams only will help them to think and answer. Whatever the type of questions is thrown to them, a student will analyze and then only he will write answer. So exams will help them to boost their critical thinking skills. And second thing is time management. So exams will help them to manage the time effectively, because exams will not be, as I told you already, exams will not be for throughout the day. So it will be in a limited amount of time. Some exams will be conducted in 45 minutes. Some exams will be conducted within 1 hour or 2 hours. So within 2 hours, he has to, whatever he has he has the memory retention, he has to apply it in the examination. And the third one is, it will also help to improve the problem solving skills. So this is about the skills. And the third thing is, after he achieve good scores in examination, after he pass out the examination, that will help them to that will help them as a gateway to select their career of their choice. And through the examinations only, a student can able to identify his own strengths and interest. So in which field he is more interested, that he can able to gauge it, he can able to analyze it. And it will also help them to choose a better university or better colleges in terms of educational pathways. And finally, he can also able to influence his career prospects, which career will be suitable for him. Because not every student will go into or will pick a same career. The exam only will decide him, okay, which career he can able to choose. So these are the things about examination. And when it comes to exam patterns in India, we have different patterns. It's not the same all over the India. CBSE, you know very well, it is Central Board of Secondary Education. This CBSE is available all over India in different schools. Here, the annual exams which is conducted, it is purely based on conceptual understanding, and more focus is given on application-oriented questions. For example, the examination pattern of CBSE is more towards multiple choice questions. Say, for example, 100 marks exam, if they keep, means 70 marks will be of multiple choice question and only 30 marks will be of descriptive pattern. So what is the advantage here means, in multiple choice question, they will not ask the question directly from the book. So only the teacher will help them to understand the concept, and that he has to apply. Okay, the question will be asked in a different pattern where he has to apply an answer by understanding of the concepts or the facts. So more and more concept is given in CBSE on conceptual basis questions. And we have another board called ICSE. Here, it will be detailed subject exams where more and more practical knowledge will be given. Like for example, if it is for 100 marks means 40 marks will be given for practical and only 60 marks he has to write it for theory. So this is the pattern which has been followed in ICSE. And state boards, it differs in every state. It is not the same in all the state. Tamil Nadu has a separate state board. Karnataka has their own separate state board pattern. So here, primary focus will be on theory-based knowledge. Why our students are not more prone towards competitive exams, why they are not succeeding the competitive exams is because of this pattern only. This has not been changed so far. If you take state board's question paper pattern, here very less internal marks will be there. Only 10 marks maybe for internal, which is for practical. And the remaining 90 marks he has to write it on descriptive pattern only. And here also what they do is, whatever the exercises given in the book, 60% of the questions have been taken from the exercise and it's still followed. Even in board exams nowadays, the same pattern is being followed. And that is the reason why state board children are able to score more in public examination, but they are unable to crack the competitive examinations like NEET or IIT. The reason is they are more prone towards theory-based learning. They just have to memorize and they have to write the answers. Conceptual understanding when we compare to CBSE and ICSE, it is very less in state board. And we have one more exam pattern, that is
NIOS. This is for Open Schooling Pattern, National Institute of Open Schooling. Here, the students can able to write the exams based on his own choice. Here, more and more choice is given, more and more freedom is given to the students. So mostly these particular examination NIOS is for dropout students. Some students, due to some financial trouble or due to some health issues, they may not be able to go to schools regularly. So for them, this NIOS is a very flexible option because he can pick the subjects of his own. He can prepare on his own schedule, and based on that, he can appear for the examination. And after clearing all these board exams, we have something called as NTA, National Testing Agency. This is the main core of all the examination because that will only decide which professional course a student can able to choose in their higher education. Higher education में जब कॉलेज को जाते हैं तो कौन सा प्रोफेशनल कोर्स, जैसे कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या रेलवे डिपार्टमेंट में जाके जमना है या कलेक्टर बनना है, whatever. So NTA only decides. So NTA conducts various examinations like JEE, Joint Entrance Exam, NEET exam, National Entrance Eligibility Test, and so many other exams we have. And these exams are mostly MCQs, multiple choice questions, and it is fully computer-based examination. Online only they have to attend. And based on this score only, a student will be able to join in different colleges through scholarships. Now let's compare the exam preparation of 90s versus today. Just a icebreaker activity for the audiences. What is one exam tip from the 90s that you think would still work or fail today? The question, I'll throw it to the audience. If anybody would like to answer to this, you can unmute and answer. तो जब हमारे जो 90s में जो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, अगर वो स्ट्रैटेजी अभी भी आजकल के बच्चे भी अगर अप्लाई करेंगे तो क्या वो वर्कआउट होगा या फेल होगा या 50-50 होगा, जो भी है, यू कैन आंसर, यू कैन अनम्यूट एंड आंसर. Anybody from the audience? One thing which I feel would work still is about the blueprint pattern that we used to follow. Okay. Okay, Blueprint may work only for state board kids. What about CBSE and ICSE kids? Yes, correct. That is what I was coming into. So now, as you mentioned, that it is about conceptual learning, it might be difficult if we go ahead with that pattern. So that will not be working out in today's time. So let's get it from the audience if they have better options, and then we can go with your suggestions. Yeah, sure. So if any audience wants to write in comment box, you can just put it in the chat box. Let's move on to the next topic. So what is the difference between traditional education versus modern education? See, traditional education is fully based on teacher-centric education. आपको पता ही होगा जब हम पढ़ते थे तो मोस्टली टीचर का हमारे ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहता था. मतलब जैसे टीचर बोलते थे वैसे ही हमें करना पड़ता था. उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना, या जो भी वो समझाते थे, ओके, जो भी वो बोलते थे वो हमको सिखाते थे, वही हमको करना पड़ता था. ओके. सेकेंड थिंग इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज. इन दोज डेज स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. जो भी बुक्स में रहता था वो समझा कर यही पढ़ के आना है, यही लिखना है एग्जाम में, ऐसे जो है बोल के दे देते थे. एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता था वो मार्क करके दे देते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 5 चैप्टर्स में से एक 20 क्वेश्चंस, ओके, ये पढ़ लेकर आ जाओ, ये एग्जाम में पूछेंगे, ये लिख डालो. सो इट वाज मोर स्पेसिफिक अपॉन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट आउट ऑफ द आई मीन इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन बुकिश नॉलेज. बुकिश के अलावा कोई और स्किल्स या कोई और नॉलेज उस जमाने में हमें लर्न करने का मौका नहीं होता था. एंड इट इज़ फुल्ली वन वे ट्रांसफर. बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था. लाइक आजकल जो हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में, लाइक सेमिनार कंडक्ट करते हैं, क्विज प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, स्पेल भी कंडक्ट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते थे. इट विल बी फुल्ली बेस्ड ऑन वन वे ट्रांसफर. ईयरली वंस कुछ एनुअल डे प्रोग्राम होता था एंड बस वही एक एक्टिविटी होता था. एंड इट इज़ मोर एंड मोर पैसिव एंड लिमिटेड एंड मोस्टली इट इज़ थियोरेटिकल. प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बहुत कम रहता था. उस आई मीन जब हम 90s में थे, लाइक प्रैक्टिकल लैब कहाँ है हमें मालूम नहीं होता था स्कूल में, राइट?
केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब कहाँ है, हमें मालूम नहीं होता था। जब हम कॉलेज पहुंचे तभी ओके फिजिक्स लैब ऐसा होता है, केमिस्ट्री लैब ऐसा होता है, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना है, ऐसे हमको जो है मालूम होता था। स्कूल लेवल में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो है बहुत कम वक्त दिया जाता था। बट नाउ इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। इन मॉडर्न एजुकेशन इट इज फुल्ली लर्नर सेंट्रिक। लर्नर सेंट्रिक का मतलब जो है स्टूडेंट के चॉइस के ऊपर जो है सिखाया जाता है। ओके, एंड टीचर जो है स्टूडेंट को बहुत सारे फ्रीडम देते हैं। टीचर यूज टू एक्ट लाइक ए फैसिलिटेटर, नॉट एज ए टीचर। तो जो भी जरूरियात स्टूडेंट के लिए होते हैं वो सब जरूरियात जो है टीचर प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू एनी मॉडर्न डे किंडरगार्टन स्कूल, टीचर जो है साथ में बैठ के बच्चों के साथ डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको मैनर्स सिखाते हैं। सो इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन लर्नर सेंट्रिक, नॉट बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक। Okay, I mean not based on teacher centric. And second thing is it is not only subject specific but also we focus on skill based knowledge nowadays, right? Like for example पहले जमाने में जो है हमारे पास जो है सिर्फ एक स्लेट रहता था, उस स्लेट में जो है 1 2 3 लिख देते थे, दैट्स इट, दैट इज स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ऐसे लिखे तो 1, ऐसे लिखे तो 2 बोल के। अब ऐसा नहीं है। अब जो है सिंपल एडिशन कॉन्सेप्ट भी अगर समझना है तो बच्चों को क्या करते हैं, हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके आके उसके सामने काउंट करके दिखा के उस बच्चे को कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को काउंट करके बताइए, जोड़ के बताइए कि कितना होता है। अगर 2 बीड्स रखते हैं और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा बीड एक रखेंगे तो कितना होता है, गिन के बताइए। सो लाइक दिस। तो बच्चे जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने के बाद उससे जो है नॉट ओनली नॉलेज गेन होता है, उसके ऊपर स्किल भी गेन होता है, वो माइंड को थिंक करता है, राइट? एंड हियर व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट मल्टी वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज हैपनिंग। ओके, यहाँ पर टीचर एक जो है one audience requested to use Tamil language as well. Yeah, sure. I'll explain in Tamil as well. So இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, நாட் only we are giving single knowledge, டீச்சர் அலோன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. இங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்டும் இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. அந்த கிளாஸ் ரூமே ஃபுல்லா வந்து என்கேஜ்டா இருக்கு, ஆக்டிவா இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி இந்த மாடர்ன் எஜுகேஷன்ல வந்து கான்செப்டுவல் பேசிஸ் மட்டும் இல்லை, ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ்க்கு மேலே நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறாங்க. Okay, like for example, so many activities we conduct inside the school, small activities. Okay, like for example Thanksgiving day ன்னு சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி grandparents day ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டக்ட் பண்ணா ரோல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் டு ரெஸ்பெக்ட் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. புரியுதா சொல்றது? அதே மாதிரி அவங்க ஏதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஏதாவது நல்லா லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா மேத்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, மேத்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சின்னதாக ஆக்டிவிட்டி சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது, எக்ஸிபிட் பண்ணும்போது பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து அதை லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மோர் அண்ட் மோர் ஃபோக்கஸ் கிவன் ஆன் கான்செப்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். இதுதான் வந்து மாடர்ன் எஜுகேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் let's move on to modern methods of preparation of exam. This is the most important topic. And before that, I just received one chat from Syed Saifullah sir. He said that he used to make own concise notes and write in his own words. Yes. So நாம படிக்கும்போது வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த கைடன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்களே நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார் ஹேஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட். புரியுதா? ஸோ அந்த திங் வந்து ரெட் லேர்னிங்கோட கொஞ்சம் அதிகமாக 1 ஸ்டெப் அஹெட் வந்து அவர் பண்ணியிருக்காரு ப்ராக்டிஸ். ஸோ அது வந்து இப்போ ஸ்கூல் லெவல்லே வந்து மோர் ஃபோக்கஸ் இஸ் கிவன் ஆன் கான்செப்டுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரேதர் தென் ரெட் லேர்னிங். ஓகே, ஸோ இப்போ மாடர்ன் மெத்தட்ஸ்ல என்னென்ன வகையில எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, தீஸ் 5 things தே ஹேவ். ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ரைட்? இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து டீச்சர் நடத்துறது கூட he can able to understand, he can able to learn. But apart from that, he can use digital learning platforms. We have so many platforms. YouTube எடுத்தாலே வந்து can able to learn everything. இப்போ சிபிஎஸ்சியில் 10th சயின்ஸ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க, யூடியூப்ல லேர்ன் சிபிஎஸ்சின்னு ஒன்று சேனல் சம்திங் இருக்கு. அதில் போனீங்கனாலே எல்லா 10th சயின்ஸோடைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து சொல்லி தராங்க ஈஸி மெத்தட்லேயே. அந்த மாதிரி அவன் ஸ்கூலுக்கு போலேன்னா கூட he can learn at his own pace. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு டீச்சர் வருவார், சப்போஸ் 50% நமக்கு புரியுது அவர் நடத்துறது அப்படின்னா, we have to cope up with it somehow. நாமளே வந்து somehow we have to prepare and we have to cope up with it. ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது. டீச்சர் சொல்றது ஒரு 50% புரிஞ்சா கூட
ஸ்டூடெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், யூடியூப்ல பார்த்து அதே லெக்சர் வந்து வேற ஒரு டீச்சர் கிட்ட கூட லேர்ன் பண்ணலாம். ஆர் வி ஹேவ் சோ மெனி அதர் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் லைக் பைஜூஸ் இருக்கு, அன்அகாடமி இருக்கு, அந்த மாதிரி சோ மெனி டூல்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். எது பெஸ்ட் லெக்சர் இருக்குதோ அதை எடுத்து வந்து லேர்ன் பண்ணலாம். ஓகே. அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ். இப்போ எல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு எழுதி பார்க்கறதுக்கு கூட தேவையில்லை, ஆன்லைன்ல அப்படியே கிடைக்குது. Okay, through online he can able to simulate, he can able to get all the practice papers and he can able to practice for his exams and get his scores immediately. புரியுதா? ஸோ எவ்வளோ வாட்டி வேணாலும் ரிவிஷன் பண்ணலாம். தேர்ட் திங் இஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி ஆப்ஸ். ஓகே, தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் ஆப்ஸ் லைக் Kahoot அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. அதில் ஆன்லைன் குயிஸ் ரெடி பண்ணலாம், ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணலாம், ஷெடியூலே ரெடி பண்ணலாம். ஷெடியூல் கூட ஒரு ஆப் இருக்கு, எந்தெந்த டைம்ல நான் படிக்கணும், என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஹி கேன் ஏபிள் டு ட்ராக் ஹிஸ் ப்ராக்ரஸ். கூகுள் கிளாஸ் ரூம் சொல்லிட்டு கூட ஒன்று இருக்கு. இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அது யூஸ் பண்றாங்க டு சென்ட் த ஹோம் ஒர்க். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இஸ் பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் schedule, he can able to complete his assignments, complete his any other assessments, and he can able to track the record of it. And fourth one is collaborative tools. இப்போ ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஏதாவது டவுட் கேட்கணும்னா கூட ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஜஸ்ட் மேக் ஏ கால் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் வயா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அண்ட் ஹி கேன் ஏபிள் டு ஆஸ்க் டவுட்ஸ். இப்போ விஐடில எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா லெக்சரர்ஸ் கிட்ட வந்து if a student unable to visit the college or campus today, he can able to just call his lecturer and he can able to get the notes from him, or through video call he can able to attend the class through Zoom meet. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. And instant feedback கூட வாங்கலாம். So after receiving the exam results, he can able to get the exact score, எவ்வளோ வந்து அவனால வந்து புரிஞ்சிருக்க முடியுது, அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக he can able to understand. Now let's move on to exam preparation tips for students. Before I go for parents guidance tips, I'd like to give some examination tips for students. So in the 7 tips வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும், 6 tips, sorry. So first one is have a good set of learning resource at your disposal. நிறைய ரிசோர்சஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும். நாட் ஒன்லி புக்ஸ், நாட் ஒன்லி நார்மல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்கூல்ல லைப்ரரி இருந்தால் அங்கிருந்து கூட they can able to pick the reference books. And apart from that ஆன்லைன் ரிசோர்சஸ் மூலியமா கூட he can able to get the learning resource. அதில் எது பெஸ்ட், எது ஈஸி மெத்தட் இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணி he can able to prepare for the examination. Second thing, practice as often as possible. This is the golden rule. So whatever the concept they are able to understand, unless and until they don't write and practice, they may not be able to remember. Third thing is after practicing, keep a good track of their progress. And then fourth point is they have to maintain their physical as well as mental health. So சில பசங்க வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 18 hours 20 hours என்க்ரோஸ்டாக இருப்பாங்க, வெறும் ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி பண்ணா கூட they cannot able to achieve good score. So what they need to do is they need to eat well, they need to do physical activities as well, they need to play sports as well, so that they can able to maintain the physical as well as mental health. And fifth one, revise until the last minute. Okay, until in the sense at least if tomorrow is the exam, is just a day before, up to that he can able to revise. After that they need to be free. On the examination day, in the examination venue, they should not revise. Okay, and then never hesitate to ask for help. This is very very important, because என்னதான் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணா கூட, okay, unless and until we don't get help from our friends or from our peers, we may not be able to understand the concepts fully. I'll just give my own example. When we used to prepare for the board examinations or in college examination, what we used to do is we used to go 3 hours or 4 hours before the examination to the campus, and we as a set of 3 members or 4 members, we used to sit and we will share whatever we have learned. So मैं जो टॉपिक्स जो है लर्न करके गया था वो मैं अपने दोस्त को बोलता था. ஓகே, நான் என்ன கற்றுக்கிட்டு போனேனோ அது வந்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். அவன் என்ன கற்றுக்கிட்டு வந்தாலும் அவன் வந்து எனக்கு சொல்லுவான். ஸோ இதில் வந்து ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜும் நடக்கும், அதே மாதிரி we will able to remember it till our lifetime. Okay, and the next thing is time management. This is very very important. எக்ஸாமினேஷன்னாலே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து எக்ஸாமினேஷன் எழுதுற வரை. ஓகே, ஸோ என்கரேஜ் யுவர் சில்ட்ரன், okay, to create a study timetable so that they can able to balance their preparation time. Okay, like for example, one day, a whole day they used to spend in school means
after coming back from school, like if they come to home at 5 o'clock means 5 to 7, let it be like play horse. Okay, they can go outdoors, they can do some activities, they can go for namaz or something. After 7 o'clock, they can prepare a schedule. Okay, evening 7 o'clock to 9 o'clock one schedule. And then up to 11 o'clock or 10 o'clock, they can wind up. And then early morning also, they can plan some schedule for preparation. So that will help them to understand to understand the concept and to prepare the examination in a easy way. And after that, they need to monitor the progress. Okay, whatever they have prepared, எவ்வளோ ப்ரிப்பரேஷன் நடந்திருக்கு, எவ்வளோ வந்து என்னாலே ஆன்சர் பண்ண முடியுது, அது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி they have to monitor the progress. And these are some of the study techniques, that is active learning. Active learning அப்படின்னா என்னன்னா, once in a blue moon learn பண்ண எல்லா டாபிக்ஸ் வந்து ரிமெம்பர் ஆக முடியாது. Like for example, most of the students, what they do is, after they announce the exam timetable only, they start preparing for the exam. அந்த மாதிரி பண்ணா it becomes very difficult. Okay, so what they need to do is, they need to promote active learning in the sense, daily எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு learn பண்ணணும். So what advice I give for my students is, every day at least go through 2 pages or 3 pages. You understand the concept, you frame your own question and try to write the answers for them. So that will help them to understand the concepts in much easier way. And practice test எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு attempt பண்ணணும். And then encourage conceptual understanding. This is very, very important. Memorization தப்பு கிடையாது. Memorization in the sense, only few things we can able to memorize. Like for example, English எடுத்தீங்கன்னா, in English only poem alone we can able to memorize. But the same, if a question is asked to write the summary of the poem, that thing and all, student if he memorizes, then it is of no use. Because poem we cannot change, he has to memorize only. But the same thing, like if he has to write the paragraph of the poem, he can write on his own also. Okay, so based on that, you motivate them to understand the concept and try to put it in the examination. And then use lot of visualization tools, like mind map எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்க, கான்செப்ட் மேப் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அது வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணும்போது எப்படி லேர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, டைம் லைன் மாதிரி ஒரு மைண்ட் மேப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுடுவோம். அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ண முடியும். ஸோ அக்பருக்கு அப்புறம் யாரு, அதுக்கப்புறம் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த இயர்ல அவர் ரூல் பண்ணாரு, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு நேம்ஸ் மட்டும் போட்டு வச்சுட்டா, it becomes easier for us to comprehend whatever we have learned. And apart from that, as I told you already, health is also very, very important. So they should eat balanced diet, they should avoid junk foods and all during the examination. And then they should get adequate sleep as well as in between break. So there is a golden rule actually. 20 minutes தான் படிக்கணும். 20 minutes படிச்சுட்டு 10 minutes again they have to just go for walk or do some other activities. And then again they should continue reading. அந்த மாதிரி படிச்சீங்கன்னா it becomes very easier for us to remember the concepts, especially when it comes to memory technique. And then dealing with exam stress. Exams வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வைக்கக்கூடாது. They should feel very relaxed, they should be mindful, they should understand what they are learning, and based on that they need to prepare and then learn. Okay, and they should approach the exams with a positive mindset. Okay, நான் ஃபெயில் ஆயிடுவேன், என்னாலே படிக்க முடியல, இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு போனீங்கன்னா it creates unnecessary tension. and எக்ஸாம் அன்னைக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டூடெண்டால ஆன்சர் பண்ண முடியாது. So as a parent, what you need to do is, you tell your student to have always a positive mindset. Okay, so this is the common source of exam stress, that is performance anxiety. அதுதான் ரொம்ப இருக்கும். இது எப்போ வரும் அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க பாரு, பக்கத்து வீட்டில் வந்து அந்த பையன் 400 அவுட் ஆஃப் 500 எடுத்திருக்கான், 490 அவுட் ஆஃப் 500 எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்தி குத்தி காமிப்பாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் பண்றது இல்லை, வெரி ரேர் தே டூ. எஸ் சலீம் சார், எனிதிங் யூ வுட் லைக் டு சே? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அண்ட் that creates unnecessary stress among the students. So comparison வந்து விட்டுடணும். So you should motivate them so that they should go away from that anxiety. And fear of failure. So most of the students, some of the students are like late bloomers. Not every student will have same kind of memory skill. You should understand that. Okay, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்க்கும் வந்து எடுத்த உடனே
ஒரே ஒரு டைம்ல படிச்சா மெமரி ஆகும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஓகே, மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் எவர் தே ட்ரை டு டூ அவங்களுக்கு வந்து மெமரைஸ் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் கண்டிப்பாக இருக்கு. ஸோ ஐ ஹேவ் சீன் இன் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவன் வந்து நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும். ஃபிசிக்கலி ஹி வில் பி ஃபிட், மென்டலி ஆல்சோ ஹி வில் பி ஃபிட். பட் த ஒன்லி திங் இஸ் ஹி வில் பி அனேபிள் டு ரிமெம்பர் த கான்செப்ட்ஸ் குயிக்லி. he will take more time to memorize. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அனெசரி கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் வந்து உட்கார வச்சுட்டு அமைதியாக அவனுக்கு வந்து பாசிட்டிவா ஃபீலிங் கொடுத்து உன்னால முடியும், இவ்வளோ படிச்சா போதும், இப்போதைக்கு இவ்வளோ படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் 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 தட்டிட்டு போகணும். அண்ட் தென் பியர் ப்ரெஷர், திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அந்த பியர் ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடாது, அடிஷனல் ஸ்ட்ரெஸ். அது அவன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றான், நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து சம்டைம்ஸ் டிமோட்டிவேட் பண்ணும், என்ன நீ படிக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பியர் ப்ரெஷர் கூட இருக்கக்கூடாது. அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது எப்படி உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா, உங்களுடைய பிஹேவியர்ல கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தே வில் ட்ரை டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தியர் ஃபேமிலி அஸ் வெல் அஸ் தியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போ பார்த்தாலும் இரிட்டபிளா இருப்பாங்க, யார்கிட்டயும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டே, பேரண்ட்ஸ் கிட்டே, ஓகே, மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சரியா பேச மாட்டாங்க, சரியா தூங்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சடனா இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா, then you should understand that some kind of stress is there in your child. Okay, and then emotional signs like overwhelming ஃபீல் பண்ணுவாங்க, மூட் ஸ்விங்ஸ் ஆகும், ஏதாவது நர்வஸ் இருக்கும், சடனா அழுவாங்க, எக்ஸாம்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிஹேவியர் பேட்டர்ன் இருந்தால் கூட இட் இஸ் ஏ சைன் தட் யுவர் சைல்ட் இஸ் ஹேவிங் ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் தென் பிசிக்கல் சைன்ஸ் எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, he will get headaches, stomach aches. Yeah, I'll mix Urdu as well. Stomach aches, fatigue, trouble sleeping, so rapid heartbeat. இந்த மாதிரி ஏதாவது physically some changes will be observed. உங்களுக்கு வந்து अड़िकड़ी headache வரலாம், सर में दर्द ऐसा बोलेंगे बच्चे, स्टमक एक होता बोलेंगे, बराबर खाएंगे नहीं, बराबर सोएंगे नहीं. तो ये सब अगर हुआ बोले तो ये जो है बच्चों के अंदर कुछ स्ट्रेस है मतलब. तो ऐसे टाइम में जो है पेरेंट्स का जो मोटिवेशन जो है वही उनको काम आएगा. ओके, सो मैं ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करना बोले तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज. सो बच्चों को मोटिवेट करो, अर्ली मॉर्निंग वेकअप होकर डिफरेंट एक्सरसाइजेस उन्हें सिखाओ. ओके, आस्क देम टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. एंड देन positive talk, that is very very important. Okay, teach your students every day that he can able to do this. Okay, I can do this, I have prepared well. ऐसे जो है बच्चे खुद जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस लेना, तो डेली. ओके, ये आकर मोटिवेट करो, एनकरेज करो. देन रिलैक्सेशन एक्टिविटीज लाइक नमाज, कुरान रिसिटेशन, योगा, लिसनिंग टू म्यूजिक, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस को जो है हम बच्चों के अंदर से दूर कर सकते हैं. नाउ this is the main topic actually. So how parents can support exam preparation, and I'll just sum up this whole presentation with these 4 points. Provide, maintain, encourage, and help. So what a parent can do is they can provide a very positive environment. बच्चों को जो है अलग स्पेस दे दीजिए. आजकल के बच्चों के स्पेशली you need to give them some space and you should monitor them side by side. Okay, ऐसा नहीं कि बच्चों को जो है फ्रीडम दे दे, एक जगह दे दे, सब कुछ प्रोवाइड कर दे, हम मॉनिटर नहीं करते, हमें हमारा काम देखते, ऐसा नहीं रहना. ओके, सो यू प्रोवाइड एवरीथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन द चाइल्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you also monitor their progress. Okay, and maintain an open communication. बच्चों के साथ खुल के बात करना, this is very very important. आजकल के बच्चों के पास स्पेशली एज ए पेरेंट इनको राइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क. ये टास्क कब आसान होगा बोले तो पेरेंट्स जो है जो भी कंसर्न्स रहता बच्चे का, आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ाए, क्या बोले टीचर्स, फ्रेंड्स क्या बोलते, क्या मिस्टेक करे, तो ये सब सुन लेना. सुनकर जो पॉजिटिव वे में अगर बच्चों को डायरेक्शन देना है वैसे देना. बच्चों को चिढ़ना नहीं, मारना नहीं. ओके, उनको जो है अनवांटेड एक अलग स्ट्रेस नहीं देना. तो रेदर देन दैट जब उनके साथ हैमरिंग करना है तभी करना, बट मैक्सिमम यू ट्राई टू बैलेंस थ्रू पैम्परिंग एज वेल एज हैमरिंग. एंड देन एनकरेज हेल्थी रूटीन्स. मतलब बच्चों को जो है नॉट ओनली मेंटल सपोर्ट बट ऑल्सो फिजिकल सपोर्ट देना. उनको जो है प्रॉपर खाना देना, बैलेंस न्यूट्रिशन देना. बच्चों को बोलना ये जंक फूड है, इसको मत खाओ, ये खाए तो ऐसा होगा बोल के बोलना. इन फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस देना. बच्चे सोते क्या देखना, ज्यादा मोबाइल में यूज करने नहीं देना उनको. ओके, शॉर्ट ब्रेक्स भी देना स्टडी हार्स के लिए. ओके, सो बच्चों को ऐसा नहीं कि
टू 500 आउट ऑफ 500 लेना, सो यू हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स टू अलग, ऐसे प्रेशर नहीं देना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन बिटवीन उनको जो है शॉर्ट ब्रेक्स भी देना, सो दैट ही कैन एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स स्मूथली, एंड देन हेल्प विद द टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाने के लिए पेरेंट्स का भी जो है रोल होता है, पेरेंट्स को बना के देना। ओके, आज एक दो सब्जेक्ट पढ़ो, बस तमिल एंड साइंस पढ़ो, कल के लिए जो है इंग्लिश एंड सोशल पढ़ो, ऐसा जो है प्रोग्रेस जो है चेक करने के लिए। एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट पे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट ऑल्सो टू लर्न एज वेल एज फॉर ए पेरेंट्स टू असेस। ओके, तो उनको जो है एक शेड्यूल बना के देना। आजकल ट्रेंड हो गया है ट्यूशन को भेजना, आई एम नॉट टेलिंग दैट ट्यूशन इज रॉन्ग थिंग, बट ट्यूशन इज ऑल्सो गुड थिंग, बट द ओनली थिंग इज अगर बच्चे को पेरेंट्स के लिए गाइडेंस करने नहीं होता है, ट्यूशन को भी अगर भेजते हैं तो ट्यूशन ऐसा रहना कि इट शुड बी ओनली फॉर डाउट क्लैरिफाइंग सेशन, नॉट लाइक अगेन अनदर क्लास, बिकॉज बच्चे जो है एवरी 40 मिनट्स स्कूल पे क्लास में सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ के आते हैं। अगर वहां पर भी ट्यूशन में भी जो है टीचर जो है सब बच्चों को बिठाकर एक क्लासरूम सेटअप बनाकर अगेन क्लास अगर लेंगे तो इट विल बी लाइक एक्स्ट्रा हेडेक फॉर द स्टूडेंट। तो अगर ट्यूशन भी अगर भेजते हैं तो इट शुड बी लाइक ही हैज टू प्रिपेयर द सेट ऑफ क्वेश्चंस। आज के लिए मुझे ये टॉपिक्स में डाउट है, ये टॉपिक से की जाकर एक बार मैं जो है टीचर के साथ लर्न करना चाहता हूँ, बल्कि ऐसा रहना। ओके, इट शुड बी इन दैट वे। Okay, and if a parent can able to support on their own means, they can do it at home itself instead of sending them to tuition. And the last thing is, Shafi sir, just yes sir, yeah, and conclude in 2-3 minutes, and then we can have a Q&A session, inshallah. yeah, Jazakallah. okay, just give me 2 minutes. Okay. This is the last, Okay. last Yeah, slide. yeah. The last slide is about how a parent can help children to set the realistic goals and milestones. Okay, so goals जो है it will change from year to year. It will not be the same. 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चे रहते हैं, इट इज लाइक ए टीनेज, टीनेज में जो है उनको एग्जैक्ट गोल, कैरियर गोल नहीं मालूम होगा, तो वहां पर जो है उनको सिर्फ एकेडमिक गोल्स बताना है, उनको सिर्फ ये समझाना है कि अगर 10th पास करेंगे तो तुम्हें ये बेनिफिट्स है, यू हैव डिफरेंट ग्रुप्स, साइंस ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है। ओके, ऐसे बताना है, एंड दैट टू यू शुड ट्राई टू गेट लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम योर चाइल्ड इटसेल्फ। बच्चों को समझना पहले, बच्चों को कहीं में इंटरेस्ट है, लाइक सम स्टूडेंट्स विल बी गुड इन कॉमर्स, सो उस बच्चे को जो है फोर्स नहीं करना कि नहीं तुम मैथ्स ही पढ़ना, एमपीसी बायोलॉजी ग्रुप में ही जाना +1 में, ऐसे फोर्स नहीं करना। सो यू हैव ए वर्ड विथ योर चाइल्ड, यू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी, उनको क्या समझ में आता है, आर्ट्स में अगर गुड है तो उनको आर्ट्स कोर्स पे ही ले जाना है, सो दैट शुड बी देयर एकेडमिक गोल। ओके, उनको ऐसा नहीं कि साइंस कोर्स में लेकर आना है, अगर बच्चे में जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो ऐसे बच्चों को ही साइंस ग्रुप में लेके जाना है, ना कि वैसे बच्चे को डॉक्टर बनाने के बजाय वैसे बच्चे को हम सीए नहीं बना सकते, एडवोकेट नहीं बना सकते, इट विल बिकम ए ड्रास्टिक डाउनफॉल फॉर देम। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज एडजस्ट द गोल्स एज नीडेड। समटाइम जो है बच्चों का माइंडसेट भी बदलेगा। ओके, सो एट दैट टाइम यू नीड टू एडजस्ट द गोल्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड में आपका एक होप होगा, लाइक मेरा बच्चा जो है 490 आउट ऑफ 500 लेना, but due to some or the other reason, can be some reason that your child might have scored 350 out of 500। अगर 350 भी लेता है ना, उसको मोटिवेट करना, उसको मोटिवेट करके नेक्स्ट क्या स्टेप है वहां पर ले जाना। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक अगेन यू हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन देम, 350 लिया है बट स्टिल यू नीड टू स्टडी साइंस ग्रुप, ऐसे नहीं करना। पहले बच्चों को समझना, बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर ए गोल फॉर देम। ओके, एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, बच्चों को बोलना अगर मिस्टेक भी हो गया फाइन, दैट्स फाइन फॉर यू। सो इससे कैसे सेटबैक्स करना, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना, ये बच्चों को सिखाना है, एंड फोकस ऑन देयर एफर्ट। ओके, कितना एफर्ट्स वो डाल रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं टू ब्रिंग द रिजल्ट्स, वो भी जो है ट्रैक करना, सो दैट विल ओनली हेल्प देम टू हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। एंड जो भी स्मॉल स्मॉल प्रोग्रेस है, बच्चे जो है छोटा एक स्पीच कॉम्पिटिशन में भी अगर विन होके आए तो भी उनको मोटिवेट करना, एक छोटा टेस्ट में भी अगर विन होके आए या अच्छे स्कोर लेके आए तब भी मोटिवेट करना। इवन इफ योर स्टूडेंट इज स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 100, then also you tell them that you can do it, you can improve yourself। Okay, this is the way you can able to help your child to score, to motivate them and to get good marks, and the reward effort, not just results। most of the parents जो है क्या करते हैं मिस्टेक, रिजल्ट्स पे देखते हैं,
मेरा बच्चा 450 लिया है या 490 लिया है, बाजू के बच्चे से बढ़ पाए ना, मेरे कजिन से बढ़ पाए ना, ऐसे नहीं रहना। ओके, जो भी उसने एफर्ट डाला है उसको जो है आप प्रेस करना। ओके, वेदर ही स्कोर्स 350 और 400, दैट्स नॉट ए मैटर एट ऑल। ओके, उसके लिए उसने एफर्ट डाला है, उस एफर्ट को जो है बाय गिविंग सम स्मॉल रिवॉर्ड, ओके, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। एंड फ्यूचर चॉइसेस के लिए भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। सो करियर कैसे चूज करना है, कितने टाइप्स ऑफ करियर हैं, ये जो है आफ्टर हैविंग ए कंसल्टेशन विद द टीचर्स और विद योर कलीग्स और विद योर फैमिली मेंबर्स, ओके, पेरेंट्स जो है इनका मेन रोल होता है। पेरेंट्स ही जो है एग्जैक्ट गाइडेंस दे सकते हैं कौन सा कैरियर जो है बच्चे के लिए ठीक रहेगा बोल के। ओके, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग करने के लिए उनको जो है मोटिवेट करना है। इट्स नॉट लाइक एक जॉब मिल गया तो लर्निंग छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। सो की takeaways for parents is only these 5 points, that is provide emotional and practical support। जब भी कोई भी मौका हो, बच्चों को जो है उनको ऐसा फील होना है कि पेरेंट्स जो है उनके साथ हैं। ओके, एंड देन एनकरेज हेल्थी स्टडी हैबिट्स, focus on effort, not on their growth, not on their results. Then help them with goal setting as well as time management and look beyond exams. Just don't think like एग्जाम ही जो है बच्चों की लाइफ है, नहीं। एग्जाम से भी बाहर बहुत सारी चीजें हैं। ओके, एग्जाम्स आर लाइक जस्ट ए सर्टिफिकेट which will help a child to progress to higher education, that's it। okay, but look beyond exams, उसके skills को, उसके talent को identify करो, and based on that you motivate your child to pick a career। And final thoughts, what I would like to tell is be present and involved, have an open communication with your child, collaborate with your teachers as well, promote a balance and as well as model positive behavior। So it's time for the audiences. I'd like to invite if they have any questions and discussion, you can feel free to ask. I'll just uh, I'll ask Aleem sir, please ask the Yes, sir. audience if you have any questions. Right, sir. Yeah, thank you so much for the update. Mashallah, wonderful insights. And I, as a teacher and as a parent, understand the importance of all the ideas that has been shared, and definitely look forward to implement these in my life and also to teach about it to other people as well. So we have amazing participants with us, academicians and teachers from various backgrounds. The floor is now open for question. So I have given all of you rights to unmute and ask the question. You can go ahead and please feel free to ask questions. Thank you. Assalamualaikum. Walaikum sir. Alhamdulillah. Nice presentation, Shafeeq sir. Jazakallah. And I think as well as the students, if, some students are there audience, might have been a question for them, also for the parents. Congratulations. And I also congratulate Alim sir and the that they have been organizing these kind of programs, which may at present doesn't seem to have a bunch of audiences, but in later course, I suppose this is still according to the requirements. Inshallah. Thank you very much. Thank you. Jazakallah Fahim sir. Anybody, any question? Any questions from audience side, or would you like to discuss based on this presentation? You can feel free to ask. Sir, this is Saifullah. So one of the major things that happens today is like previously, the parents were having a lot of stress and they were trying to push the students, but that helped them, the students, to do more than what they were capable of. For example, if I was scoring 70, they will ensure that somehow with the pressure, I'm not supporting that that should be the way. They can even push to 80, 90 like that. But today, what is happening with a lot of support and understanding and all of that, somehow the parents are, being part of, even if the student is capable of scoring 80, with a lot of friendliness and all of that, we are trying to, reduce that stress and also the, somehow we lose that, how to get, I'm not saying it should be stressful, but how do we still ensure that whatever he's capable, he should be beyond that capability, he should try to achieve is what the ultimate goal should be, right? That's the question.
One thing is that in those days, that is when I was also studying, if I fail, my father will not say that it is because of my negligence. He will also motivate me. He will tell me that okay, fine, ये बार fail हो गए, next time जो है अच्छा perform करना बोल के. But next time अगर same mistake मेरे से हुआ, then he used to hammer me. Definitely उनके तरफ से मार पड़ता था मुझे, belt में मार खाया. Okay, but this trend is somehow reduced these days. It is because these generation kids, they are like more sensitive. अगर थोड़ा सा भी अगर हम रफ बिहेव करते हैं, दे गो टू सम एक्सट्रीम लेवल. इसलिए हमें क्या करना है बोले तो, ऐसे आई मीन ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे बच्चों को जो है, वी नीड टू गिव सम ऑप्शंस. इफ यू स्कोर, if you improve your scores from 50 to 70, I'll take you to some trip. I'll take you to some place where you can able to explore, or I'll give you some sports kit, or I'll enroll you for some sports membership, or I'll enroll you for some like for example, if he is interested in painting means I'll provide you some painting kit. ऐसे जो है बच्चों को ब्राइब दे जैसा जो है वी हैव टू मोटिवेट देम. सो इससे क्या होगा जो है, बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली. बिकॉज अगर मैं अच्छा स्कोर करूंगा तो मुझे पेरेंट्स जो है ट्रिप लेके जाएंगे. तो ये जो है उनके अंदर एक एंथुसियाज्म क्रिएट होगा, rather than स्कोल्डिंग देम और टेलिंग देम दैट यू आर अनफिट. क्योंकि आजकल मैं भी बहुत से बच्चों को जो है लाइव एग्जांपल्स देखता हूँ. अगर टीचर भी जो है बच्चों को स्कोल्ड कर देते हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स बच्चों को स्कोल्ड करने के बजाय टीचर को ही आगे स्कोल्ड करते हैं. हाउ डेयर यू दैट यू आर स्कोल्डिंग माय चाइल्ड लाइक दिस, ही आई नो ही विल प्रिपेयर. तो ऐसे माइंडसेट के पेरेंट्स भी हैं. Okay, so we cannot balance these things like how our parents used to do in those days, because the sensitive issues there. So we need to try to balance that pampering as well as hammering method. So already मैंने अपने सेशन में बताया था स्लाइड में. So both pampering as well as hammering is required. So correct timing देखकर उस हिसाब से जो है रिएक्ट करना है बच्चों के सामने. That is the only thing. Any other question from audience? There is an audience. He has asked next online class kab sir? Halim sir. Inshallah, Yes, sir. it will be on following Friday. Following Friday Friday. night. Every Friday we have a session at 9 p.m. So while concluding, I'll talk about it more. Yeah. Any other questions from audience? We have 15 audience now. Okay. Thank you everyone for giving me this opportunity. I was expecting more audience, but that's fine. We had a very intellectual audience among them. If you have any other questions also, you can feel free to approach via GGV as well. I'm ready to answer all your questions. Or if you need any other assistance also, I'm ready to provide my assistance. Thank you everyone, and Jazakallah Yeah. khair for giving me this opportunity. Thank you so much, Shafeeq sir, for your valuable words, insights, and the discussion that we all had. Definitely, you are being in the field and you know the practical challenges that we all come across when talking to these students these days. And your session had enlightened us with a lot of insights that can be helpful as we progress in our lives. So GGV is thankful to the speakers for being a part of the programs on Fridays. We would recommend that if you know some of the resource persons who can be adding more value to the diversified audience that we have, please feel free to reach out to us in the contact which is given, so that we can have them in our sessions and a lot of people can get benefited. You can be a part of GGV as well. If you are somewhere and somehow connected to one anybody through various means, please let us know so that we can connect and have yourself enrolled in the membership. Right. Anything else from your side, Khalid sir, Saif sir? Do you want to add anything? Also, I mean, if the people are expecting some topics, they can suggest topics as well. So reach out to the GGV team and they can Yeah. suggest some good topics. Definitely, sir. Yeah, that's a good suggestion. So please feel free to, have the topics of interest that can be benefited for a larger audience. We have people from, youngsters and also professionals, teachers, and homemakers. Let's hope for the best. Yeah. Thank you Yeah, so and much. spread the word. I mean, Yeah. one last thing, like, we should spread the word and try to get more and more get benefited.
So, I mean, each one can try to refer more people and spread the word so that this is happening almost every Friday. And the team puts a lot of effort, so we can benefit from that. So, Actually, might be the timing issues. Maybe at night, 9 to 9:30, it's like dinner time for many, and they may miss out these sessions. Maybe if we try to shift it to a morning session or on Sundays, we may expect more audience. Yeah, okay, let's try, sir. We'll have a different timing and different days Yeah. in the upcoming sessions. Let's see which benefits the most, and we can plan accordingly. Yeah, Okay. thank you. Thanks. Thank you, Shafeeq sir, once again for your wonderful session. I Yes, thank, Madam. on behalf of GGB, I thank all the participants who are here, and we look forward for your active participation in the upcoming training program as well. Thank you, everyone. So I'll, yes, Munir sir says the time is very much comfortable for almost all the regions. Yeah. Okay. That is why, one of the reasons Khalid Sab also suggested that we'll have it after Isha, India time, so that people who are in Gulf and other parts of the world can also be able to be a part of it. Okay. If Salma it's says very useful recorded session. session, Thank you. we can Yeah. also share the link via YouTube. Yes, sir. Yes, sir. Once the YouTube channel is up, we'll be uploading all the recorded sessions of the speakers that we have so far, and we'll spread it in the respective channels. Okay. Jazakallah, Shafiq sir. Thank you everyone for joining us. Uh, have a good weekend ahead. Mhm. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.